Hello everyone, this is ilm-setu. Welcome to my channel, and in this video we will understand the concept of learning, different definitions given by psychologists and learning styles, especially Neil Fleming's VARK model. तो चलिए सबसे पहले हम लर्निंग की मीनिंग समझते हैं. सो सबसे पहले हरलॉक ने 1942 में definition दी थी that learning is development that comes from exercise and effort. Through learning, children acquire competence in using their hereditary resources. So Hurlock के according learning प्रैक्टिस और एफर्ट से होती है. सिर्फ पैदा होने से स्किल्स डेवलप नहीं होती, उन्हें यूज़ करना और प्रैक्टिस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, a child may have the natural ability to sing, but singing improve नहीं करता. रेगुलर प्रैक्टिस से उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करती है. सो प्रैक्टिस के बिना एबिलिटी डेवलप नहीं होती, इसी को लर्निंग कहते हैं. एंड अब हम देखें हिलगार्ड और एटकिंसन की 1979 की डेफिनेशन. That is, learning may be defined as a relatively permanent change in behavior that occurs as the result of prior experience. So हिलगार्ड ने क्या कहा है कि लर्निंग एक परमानेंट बिहेवियरल चेंज है जो एक्सपीरियंस से आता है. ये चेंज टेम्पोररी नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा गर्म चीज़ छूने के बाद जल जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसा नहीं करेगा. एक्सपीरियंस के थ्रू बिहेवियर में चेंज होता है. सो दैट्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू हिलगार्ड एंड एटकिंसन. नाउ coming to Murphy's definition, which was given in 1968. The term learning covers every modification in behavior to meet environmental requirements. So मर्फी के अकॉर्डिंग लर्निंग का मतलब है एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने बिहेवियर को चेंज करना, यानी एडजस्टमेंट और अडैप्टेशन की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम न्यू सिटी या न्यू कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ के रूल्स और कल्चर के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं. ये एडजस्टमेंट लर्निंग का पार्ट है. सो दैट वाज मर्फीज डेफिनेशन. और अब अगर हम वुडवर्थ की 1945 की डेफिनेशन देखें, any activity can be called learning so long as it develops the individual in any respect, whether it could be good or bad, and makes him alter his behavior and experiences differently from what they would otherwise have been. So वुडवर्थ के अकॉर्डिंग लर्निंग पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है. बस ये कंडीशन ये है कि बिहेवियर और एक्सपीरियंस में चेंज आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, गुड हैबिट सीखना पॉजिटिव लर्निंग है और बैड हैबिट सीखना नेगेटिव लर्निंग है. दोनों ही लर्निंग के अंडर आते हैं, है दोनों ही लर्निंग. सो व्हाट दैट वाज हिज पॉइंट. अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे विच वाज गिवन बाय स्मिथ in 1962, which is learning is the acquisition of new behavior or the strengthening or weakening of old behavior as the result of experience. It means instead of change in existing behavior or acquisition of new behavior, learning may also result in discontinuance or abandonment of existing behavior. So, स्मिथ क्या कह रहे हैं? स्मिथ कह रहे हैं कि लर्निंग सिर्फ नया बिहेवियर सीखना नहीं होता, बल्कि पुराना बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करना या वीक करना भी लर्निंग है. Smith also points out that unlearning is also learning in itself, which explains that unlearning का मतलब है गलत या unwanted habits को छोड़ देना, और ये प्रोसेस भी लर्निंग का ही पार्ट वो बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट लास्ट मिनट पढ़ने की हैबिट छोड़कर रेगुलर स्टडी का स्टार्ट करता है तो पुरानी हैबिट को छोड़ना ये भी एक लर्निंग है. सो दैट दिस is what he meant by his definition. So ultimately he is giving the concept of unlearning that we today acknowledge very much. So learning involves experience, effort, adjustment, behavioral change, and even unlearning. Now that we understand
what learning is, let us move on to learning styles. So, learning styles refer to different ways in which individual prefer to learn and understand information. The term यहाँ पे देख सकते हैं, the term learning styles corresponds to the understanding that every individual learns differently. हम हर कोई अलग तरह से learning करता है, हमारे अलग अलग तरीके होते हैं चीज़ों को समझने की. So learning styles define the way how people learn and how they approach information. It is a pattern of behavior that human beings use for new learning. ठीक है. An individual's learning style refers to the preferential way in which the learner absorbs, processes, comprehends, and retains information. Different learners learn in a variety of ways by seeing and hearing, working alone and in groups, reasoning logically and intuitively, and sometimes by memorizing or visualizing. So ये लर्निंग स्टाइल. अब लर्निंग स्टाइल, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि लर्निंग स्टाइल्स इम्पॉर्टेंट क्यों है. लर्निंग स्टाइल्स को आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस से समझ सकते हो. हम इतना एम्फोसाइज क्यों करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे, हम क्यों हर बच्चे को अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको क्यों समझने की कोशिश करते हैं, टू अल्टीमेटली अंडरस्टैंड व्हाट देयर लर्निंग स्टाइल इज़. वो किस तरह से सीख सकते हैं, वो किस तरह से उनकी लर्निंग करी जा सकती है, उनको कैसे हेल्प करी जा सकती है. तो ये लिंक है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से. सो हर स्टूडेंट के लर्निंग स्टाइल्स डिफरेंट हो सकती हैं और होती ही हैं इनफैक्ट. ठीक है. नाउ कमिंग टू नील फ्लेमिंग्स वार्क मॉडल. नील फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस किया था वार्क मॉडल इन 1987 that was designed to help students and others learn more about their individual learning preferences. So VARK stands for visual, as we can see, and then auditory, reading and writing preferences, and then kinesthetic. So coming to the visual part. So who are visual learners? Visual learners learn best through diagrams, charts, images, and videos. They prefer the use of images, maps, and graphic organizers to access and understand new information. As we are learning through a PPT, so this is good for visual learners. If you are seeing this, you are a type of learner who is more visually active. फॉर एग्जाम्पल फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स या पीपीटी स्लाइड्स देखकर समझना. नाउ कमिंग टू auditory learners. Who are auditory learners? Those learners who prefer learning through listening, discussions, and lectures. They best understand new content through listening and speaking in situations such as lectures and group discussions. There are students, there are learners who listen podcasts, TED talks, and all. So those people are auditory. Those students are auditory learners, or those learners are auditory learners. Their style is auditory. Now coming to reading writing preference. Read. So learners with strong reading writing preference learn best through words. These learners can translate abstract concepts into words and essays. फॉर एग्जाम्पल नोट्स बनाना, बुक्स पढ़ना और रिटन मटेरियल से प्रिपरेशन करना, जैसा कि ऑब्वियसली ऑफन हम सब करते ही हैं. नोट्स बनाकर पढ़ना, माइंड मैपिंग करना ऑन द नोट्स और रीडिंग. सो इट इज़ कॉमन. Now coming to kinesthetic learners. So who are kinesthetic learners? Kinesthetic learners best understand information through tactile representation of information. They learn best through figuring things out by hand or by their own. Kinesthetic learners best through hands-on activities and real-life experiences. For example, experiments, role play, practical work, या learning by doing. So, the VARK model shows that learners have different preferences and effective teaching should address these differences. So, मैंने वहाँ पे individual differences की बात करी थी, तो वो यहाँ तो ये उसी को कह रहा है कि the VARK model shows that learners have different preferences.
अगर हम अपना लर्निंग स्टाइल समझ लें तो हम ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं. Now, so in this video we discuss the meaning of learning through different definitions given by psychologists like Herlock, Hilgard, Atkinson, Murphy, Woodworth, and Smith. We understood that learning is not just gaining new knowledge, but it also includes what it includes: change in behavior, adjustment to the environment, practice, experience, and even unlearning old habits. We also discussed learning styles and Neil Fleming's VARK model, which explains that learners may be visual or auditory, read write, or reading writing preference based or kinesthetic. Now, I hope this video helped you understand the concept of learning in a clear and simple way. Thank you for watching.